Hello students. Today I will be taking lecture number 32 on radioisotopes for the subject Pharmaceutical Inorganic Chemistry, that is BP 104T. In the previous 3 lectures I have already discussed about what are radioisotopes, then what are different types of alpha particles, beta particle, gamma particle and so on. Apart from it, I have also discussed about the half life of the radioisotopes and the effects, the harmful effects they have on our body. So, in this particular lecture, I will be discussing about the uses of radioisotopes in medicine, or to be precisely nuclear medicine. So, as I have already told you a brief definition about the isotopes. So, we will be discussing somewhat more in this. So, what are isotopes? Isotopes, they are the atomic species which are having two whole numbers. One is your atomic number and one is your mass number. So, what are isotopes? Isotopes, they are those atoms in an element which have the same atomic number, but they are having a different mass number. So, what are isotopes? Iso means same. So, same is their atomic number, but different is their mass number. So, because they are having the same number of protons, and because of this, these isotopes, they have the same chemical properties, but as the number of the neutrons are different, so they have different physical properties. Okay. So, here I have written that the protons, the number of the protons in the nucleus is your Z, that is what we call it as an atomic number, and the total number of protons plus neutrons, they are known as Z, that is the mass number. So, all the isotopes, they will be having same atomic number, because of which they will be having same chemical properties, but because of different mass number, they will be having different physical properties. So, these isotopes, they can be stable or unstable or radioisotopes. I have already told you about this thing, that radioisotopes, they are not stable. In order to attain a stable configuration, they undergo the radiations. Okay, they give on the radiation so that they can attain a stable configuration. So, the nuclei, they are having a special property, they emit energy. This energy is in the form of the ionizing radiation while searching for a more stable configuration. This is the reason that why radioactive compounds, they emit the radiations. So, isotopes, this word is being derived from Greek word isos means same and topos means place. So, they are the atoms from a same element whose nuclei, they have a different number of neutrons, that is why they differ in the mass, but they have the same atomic number. So, I will be giving you few examples of the compounds that do exist as an isotopes. For example, carbon. Carbon in nature is present as a mix of 3 isotopes. 3 isotopes are 12 carbon, 13 carbon and 14 carbon. So, these are the 3 isotopes of the carbon. Most of the chemical elements, they possess more than one isotope, but as in the case of the tin, it is the element which is having the highest number of stable isotopes. Tin is having almost 10 number of stable isotopes. So, tin is having the highest number of isotopes. So, what are the types of isotopes? So, types of isotopes, first is natural. The natural isotopes, they are being found in the nature, as the name suggests, natural. So, they are found in the nature. For example, hydrogen, I have already told you, hydrogen, it is a natural isotope. It contains very important, it contains 3 isotopes, that are deuterium, hydrogen, deuterium and tritium, 1H1, 1H2 and 1H3. Carbon is also having different isotopes, carbon 12 and carbon 13, and but they differ in their physical property because of the difference in their mass number.
So carbon 12, it is a referential base of atomic mass in any element, and carbon 13, it is the only carbon which is having the magnetic property, and carbon 14 which we use as an radioactive isotope, because only carbon 14 is having the radioactive property. So apart from natural isotopes, there are artificial one also. So as the name suggests, artificial, they are man-made, they do not exist in the nature, but they are being prepared in the generators, in the nuclear reactors, in the nuclear accelerators, where we bombard them with the small subatomic particles which result in the formation of different isotopes. So these isotopes, they are manufactured in the nuclear laboratories by the bombarding of subatomic particles, and these subatomic particles, they usually have a very short lifespan, mostly due to their unstable nature and radioactivity. So some isotopes of uranium are also used for the nuclear work, such as they are used for the electricity generations. So as I have already told you that AERB, that is Atomic Energy Research Board of India, it regulates or it authorizes and provide the approved guidelines for the production of such type of radioactive isotopes. So these isotopes, they are a very good source of electricity generations, and there are nuclear reactors which are being used for electricity. So radioisotopes, they are the unstable form of an element. They emit radiation to transform into a more stable form. So this radiation, it can be easily traced, and it causes the changes in the substance it falls upon. So when the radioactive any radioactive radiation, it falls upon a substance, so we can create the image of that substance. So these special property, this is special property of creating an image when the radioactive isotope is irradiated on any substance, it's find a very useful in medicine industry and other areas. So this is the reason, because of this property, that we use radioactive isotopes in nuclear medicine. So most of the radioactive isotopes which we are using, they are artificially produced in research reactors, they are not natural, they are not available in nature as such, they are being man-made by in the nuclear reactors and accelerators by exposing a target material to intense particles such as neutrons or protons. For example, if we want to create a radioactive isotope, we will have a compound, any normal compound, then we will irradiate it with some other small subatomic particles which will result in the fission and the fusion reactions. So what are fission and fusion reactions? Okay, this is fission and fusion. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बेसिकली जहाँ पे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को जनरेट करते हैं, वहाँ पे बेसिकली दो ही टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है फिशन और एक होती है फ्यूजन. फिशन का मतलब है व्हेन अ बिग पार्टिकल इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड फ्यूजन मीन्स फ्यूज when the small particles they join in order to form a big particle. तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं. So radioactive isotopes, they are a very effective tool which are used in radiopharmaceutical sciences, in industrial application also. They find their use in environmental tracing and as well as for the biological studies. I have already told you that how by using an autoradiograph method we can take the image of the sections of an animal where we want to study the particular area. So aside from the research reactors and accelerators, they can also be obtained from the radioisotope generators. So talking about the production of radioactive isotopes, it is an altogether a very elaborated topic. So I don't have the time to explain that much, but in brief I will tell you that what happens when we want to produce a radioactive isotope. तो हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट जो है जिससे हमको रेडियोएक्टिव आइसोटोप बनाना है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में लेते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर में लेने के बाद में हम क्या करते हैं, उसकी बॉम्बार्डमेंट करते हैं. बॉम्बार्डमेंट मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं हम उसको उस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है एंटर कराते हैं.
तो जब हम उसको एंटर कराते हैं तो जब डिफरेंट फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन होती हैं तो उस वजह से क्या होता है, जो वो कंपाउंड है वो अदर जो है पार्ट कंपाउंड क्या करेगा, उसको एलिमेंट को वो क्या करेगा, फॉर्म करता है। तो जो एलिमेंट हमारा वो बनेगा रेडियो एक्टिव, जो आइसोटोप होगा या जो रेडियो एक्टिव हमारा कंपाउंड होगा, उसको हम क्या करते हैं, फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के लिए हम जो है आयन क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो है उसको कलेक्ट करके किसी एल्कलाइन या एसिड बेस में भी हम उसे क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन? तो न्यूक्लियर मेडिसिन इट यूजेस रेडिएशन टू प्रोवाइड द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। मेन बेसिकली जो रेडियो आइसोटोप्स का मेडिसिन में यूज़ है, द फर्स्ट वन इज़ इन द डायग्नोसिस प्रोसीजर्स। डायग्नोस्टिक टूल्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी पेशेंट है, हिज और हर इफ़ एनी बॉडी ऑर्गन इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वी हैव टू डू द डायग्नोसिस फर्स्ट। तो जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनको हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है डायग्नोस्टिक टूल का काम करते हैं। उसके अलावा अगर इफ़ एनी पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, देन टू ट्रीट द कैंसर वी ऑल्सो यूज़ द रेडियो आइसोटोप्स। तो क्या करते हैं, हमें पर्सन का स्पेसिफिक ऑर्गन की इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें उसे ट्रीट करना है, तो उन डायग्नोस्टिक रूटीन प्रोसीजर्स में जो है हम यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स को। सेकेंड इज़ योर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, स्पेशली कैंसर। Radioisotopes, they are being widely used for treating cancer. In treating cancer, what we do, we use the radiation to weaken or destroy the particular targeted cell. For example, if a person is having cancer in maybe in lungs, so we will use the radiations particularly to destroy the cells which are being confined to that lungs area. Over 40 million nuclear medicine procedures are performed each year, and the demand for the radioisotopes is increasing up to 5% annually. And apart from the nuclear medicine and radiotherapy, radioisotopes they are also being used for sterilization. What is sterilization? Sterilization is basically complete removal of microorganism. So whatever we use in, for example, if we are using syringes or if we are using cotton wool also, then they all are need to be sterilized. There should not be any microorganism present in them, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा देन इट विल बी ट्रांसफर टू द पर्सन जिस पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, सिरिंज को या फिर कॉटन को। तो स्टरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें ये इक्विपमेंट्स जो भी हम यूज़ करते हैं, इवन डॉक्टर्स वट एवर दे यूज़, तो उनको हम स्टरलाइज करके कंप्लीट एकदम कोई भी अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम कंप्लीट रिमूवल करते हैं। स्टरलाइजेशन फिर डिवाइड होता है कि हम ड्राई कर रहे हैं या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है या फिर स्टीम स्टरलाइजेशन है, देन दैट इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी. So in this particular table I have tried to confine the number of the different radioactive isotopes which are widely used in medicine. So first one is your cobalt 60. Cobalt 60 is basically used to prevent cancer. Next is your iodine 131. Iodine 131, it is used to locate the brain tumors, to monitor the normal functioning of an heart, liver or even the thyroid activity. Next is your carbon 14. Carbon 14, it is used to study the metabolism changes for patients with diabetes or gout and anemia. Next is your carbon 11. Carbon 11, it is tagged onto the glucose to monitor organs during PET scan, that is positron emission tomography. Next is your sodium 24, it is used to study the blood circulation. Next is your thallium 201,
It is used to determine the damage in heart tissue, detection of tumors. Last one is your technetium 99M, very widely used. It is used to locate brain tumors and damaged heart. As you can see, the majority of the area where the radioactive isotopes are being used is for the diagnostic procedures, just to study about whether a person organs they are functioning normally or not, and if they are not, then what is the problematic area, so that the treatment becomes easy. Diagnostic radiopharmaceuticals, every organ in our body is different, it works differently, it has a different chemical point of view. So, what doctors and the chemists do, they have identified a number of such chemicals which are absorbed by the specific organs. जो हमारे specific organs है, for example heart है, liver है, lungs है, kidney है, brain है, तो उन सब की एक अलग अलग क्या है, different chemical property है. तो इस chemical property को ही हम क्या करते हैं, use करते हैं. फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये आयोडीन को बहुत इजीली क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है. अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इट कंज्यूम्स ग्लूकोज. तो इस नॉलेज से व्हाट रेडियो फार्मासिस्ट डू कि जो डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स हैं उन्हें इन बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ में उनकी रेडियो लेबलिंग कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन रेडियो एक्टिव आयोडीन, दैट इज आयोडीन 131, तो इट विल बी टेकन अप बाय द थायराइड ग्लैंड. तो हमें थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर जो है इमेज जो है मिल जाएगी, और जहाँ पे वो नहीं एब्जॉर्ब हुआ है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड में वो नहीं शो रहा है, इसका मतलब दैट पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो वंस अ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ वन ऑफ दिस सब्सटेंस इट एंटर्स द बॉडी. जब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, फिर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. जैसे नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि नॉर्मली जैसे थायराइड ग्लैंड आयोडीन को यूज़ करेगा, वो नॉर्मली उसी तरीके से आयोडीन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और जैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं उसी तरीके से यूजुअल वेज में ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे. तो इसीलिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ऐसे इंटरनली यूज़ करने का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जितना हम क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं इट डज नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट. So, diagnostic radiopharmaceutical, it can also be used to examine the blood flow, that blood flow to the brain, मतलब brain में जो blood flow है that is taking place normally or not. Even the functioning of the liver, lungs, heart और kidney. तो नॉर्मल जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग के लिए हम स्टडी करने के लिए इनको यूज़ करते हैं. इवन टू एसेस बोन ग्रोथ एंड टू कंफर्म अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स. Another important the use of diagnostic radiopharmaceutical is to predict the effects of surgery and assess changes since treatment. For example, a surgery has been done on a person related to some brain or some heart disease. So, after that we can use the radiopharmaceuticals to study whether these the surgery has taken place, it is effective or not. So, the amount of the radiopharmaceutical which is given to a patient is sufficient to obtain the required information before its decay. तो रेडियोएक्टिव कंपाउंड डिके हो उससे पहले ही हम सारी उसकी इंफॉर्मेशन जो हमें ऑर्गन को स्टडी करना है हम स्टडी कर लेते हैं. तो इस वजह से क्या होता है, जो रेडिएशन डोज रिसीव्ड हो रही है पेशेंट को, इस वजह से उसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता और कोई ट्रेस भी नहीं बचता, क्योंकि एज यूजुअल जैसे वो एलिमिनेट होते हैं थोड़े टाइम में ही हमारी बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाएंगे. तो दिस इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि व्हेन वी यूज़ सिरिंज और एनी अदर इन्वेजिव टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का वहीं पे एडवांटेज है. इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव, वी डोंट हैव द टू टेक आउट द ब्लड और वी डोंट हैव टू टेक आउट द ऑर्गन टू इन ऑर्डर टू स्टडी. सो और इफ़ेक्टिव है बिकॉज बहुत क्लियर जो है ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है हम आउटसाइड द बॉडी ही हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो इसीलिए इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, डायग्नोस्टिक टूल. Radioisotope which is used for diagnosis, it must emit the gamma rays of sufficient energy to escape from the body, और इसका हाफ लाइफ इतना कम होना चाहिए कि डिके हो जाए, जिससे इससे पहले कि इमेजिंग जब ख़त्म हो हमारी, उस इमेजिंग के ख़त्म होते ही वो डिके हो जाना चाहिए, जिससे कि इजीली वो शॉर्ट टाइम स्पेन में ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाए.
मोस्ट वाइडली जो रेडियो आइसोटोप विच इज़ यूज्ड इन रेडियो फार्मास्यूटिकल इज टेक्नीशियम 99। तो 80% जो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में इसको यूज़ करते हैं। ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, इट इज़ नॉट अ नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और आइडल करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर अ न्यूक्लियर मेडिसिन, हम इसे स्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो जो एडवांटेजेस है टेक्नीशियम के वो क्या क्या है? फर्स्ट, इसका जो डिके है इट इज़ एन आइसोमेरिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या होगा, ये एमिट करेगा गामा रेस को जो कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कोई हाई एनर्जी बीटा एमिशन नहीं होता, इसीलिए कोई रेडिएशन डोज जो पेशेंट को मिलती है वो बहुत कम होती है। सेकेंड, गामा रेज हैं तो वो लो एनर्जी है और इजीली जो है वो ह्यूमन बॉडी से एस्केप हो जाती है और गामा कैमरा से हम इन्हें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। टेक्नीशियम की जो केमिस्ट्री है इट इज़ सो वर्सेटाइल कि ऑलमोस्ट ये ट्रेसर हर एक्टिव कंपाउंड के साथ में हम इसे एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर की तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे ये पर्टिकुलरली टिश्यू या ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट में जो है कंसंट्रेट हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, दैट इज़ ऑफ 6 आवर्स। इतनी लॉन्ग इनफ है कि हम इनफ मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं, बट शॉर्ट इनफ टू मिनिमाइज द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग के लिए हम थेलियम 201 क्लोराइड और टेक्नीशियम 99 को यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज़ एन हार्ट डिजीज। पेट इमेजिंग के लिए वी यूज़ फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज इनकॉर्पोरेटिंग F18। इसका हाफ लाइफ इज़ जस्ट अंडर 2 आवर्स एज अ ट्रेसर, तो रेडिली इनकॉर्पोरेट हो जाता है विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन और बहुत ही गुड इंडिकेटर है ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। Diagnosis medicine, there is a strong tendency towards using more cyclotron produced isotopes, जैसे कि F18 यूज़ करते हैं for PET and CT widely available है। न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी जो यूजेस हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थेरेपी, दे आर वेरी फ्यू बट नेवरदलेस इम्पॉर्टेंट। कैंसरस ग्रोथ जो है सेंसिटिव होती है टू डैमेज बाय रेडिएशन, इस वजह से जो कैंसरस ग्रोथ है इसको हम कंट्रोल और एलिमिनेट कर सकते हैं by irradiating the area which contains the growth। एक्सटर्नल इरेडिएशन में हम क्या करेंगे, गामा बीम जो है यूज़ करते हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड लाइक कोबाल्ट 60 सोर्स। इन डेवलप्ड कंट्रीज दे ऑल्सो यूज़ लीनियर एक्सेलरेटर्स जिनमें हाई एनर्जी एक्सरे सोर्सेज होते हैं। और क्या करेंगे, प्रिसाइज एरिया ऑफ द ब्रेन में जहाँ पे भी है उसी एरिया को क्या करते हैं, फोकस करते हैं विद अ कैंसर ट्यूमर और उसको ट्रीट करते हैं। इंटरनल रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी में इसमें क्या करेंगे, स्मॉल जो रेडिएशन सोर्स है जो कि यूजुअली गामा और बीटा एमिटर होता है, इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट के अंदर। इसे बेसिकली जैसे कि आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं थायराइड कैंसर के लिए, उसके अलावा इरिडियम 192 यूज़ करते हैं फॉर हेड एंड ब्रेस्ट। ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए, ल्यूकीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है, तो इसमें क्या करेंगे, जो डिफेक्टिव बोन मैरो को है पहले उसे हम किल कर देते हैं विद यूजिंग अ लीथल डोज ऑफ रेडिएशन, फिर उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्दी बोन मैरो फ्रॉम द डोनर। थेराप्यूटिक रेडियोफार्मास्यूटिकल्स जो है दे आर यूजफुल टू डिस्ट्रॉय और वीकन द माल फंक्शनिंग सेल्स यूजिंग रेडिएशन। रेडियो आइसोटोप्स जो रेडिएशंस को जनरेट करते हैं, दे कैन बी लोकलाइज्ड इन द रिक्वायर्ड ऑर्गन इन द सेम वे इट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस थ्रू अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। Next, the iodine 131, samarium 153 and phosphorus 32, they are also used for the therapy. Iodine 131 is used to treat the thyroid for cancers and other abnormal conditions such as hyperthyroidism. There is a disease known as polycythemia vera where there is an excess of blood vessels are produced in the bone marrow. तो वहाँ पे हम phosphorus 32 को use करते हैं to control this excess. Cesium 131, palladium 103 and radium 223 they are also used for brachytherapy। इसमें ब्रैकाइथेरेपी में क्या करते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसे इंटरनली जो है हम पेशेंट को देते हैं वेयर दे एमिट द रेडिएशंस। द एक्सरे एमिटर्स दे आर हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 9.7 days, 17 days and 11.4 days respectively। सो इट इज़ मच लेस देन 60 days ऑफ आयोडीन 135। तो हम इसको आयोडीन 135 की जगह क्या कर सकते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन, देयर आर डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर and they are sterilized by the gamma rays from a cobalt 60 source. This technique is very cheap and more effective than the steam heat sterilization.
तो फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल सिरिंज जो यूज़ करते हैं उसको हम स्टरलाइज कर सकते हैं कि भाई गामा रेज। इसका एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, एक तो ये कोल्ड प्रोसेस है, मतलब हम कोई हीट नहीं यूज़ कर रहे हैं या ना ही हम कोई हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी हीट सेंसिटिव आइटम्स होते हैं जैसे कि पाउडर्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, या इवन जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस है जैसे कि बोन, नर्व या स्किन जो कि हमें टिश्यू ग्राफ्ट के लिए यूज़ करनी है, उनको हम बहुत ईजिली जो है इसके साथ में स्टरलाइज कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन के एडवांटेज, एक तो ये सेफ है, ये चीप है, क्योंकि इवन हम कंपाउंड को पैक होने के बाद में भी क्या कर सकते हैं? स्टरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन ईजिली क्रॉस द पैकेज। स्टरलाइज शेल्फ लाइफ जो है आइटम की प्रैक्टिकली इनडेफिनिट है। अगर सील ब्रोक नहीं करा है तो कंपाउंड इट विल रिमेन स्टरलाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपार्ट फ्रॉम सिरिंजेस, मेडिकल प्रोडक्ट्स भी स्टरलाइज होते हैं बाय द रेडिएशन। दे आर कॉटन वूल, जो कॉटन वूल हम लोग नॉर्मली फर्स्ट एड के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, बर्न ड्रेसिंग्स जो यूज़ होती है इन द केस ऑफ अ बर्न पेशेंट्स, सर्जिकल ग्लव्स, हार्ट वॉल्व्स, बैंडेज, प्लास्टिक, and rubber sheets which are being used in the hospital in an OT, and even the surgical instruments. They can be easily sterilized by using the radioactive isotopes by especially by the gamma rays. Sodium iodide 131, it is an isotope of iodine which is extensively used in clinical nuclear medicine, imaging and radiation therapy. So there are different isotopes 123, 124, 135 and 131. They are used for SPECT or PET imaging. तो हाफ लाइफ इज ओनली 8 days। मेजर ये इसको हम यूरोनियम और प्लूटोनियम से जो है सोडियम आयोडाइड 131 या आयोडाइड 131 को प्रिपेयर करते हैं। तो प्रोडक्शन, इसमें हम न्यूट्रॉन रेडिएशन करते हैं टेलुरियम का टारगेट को न्यूक्लियर रिएक्टर में। इरेडिएशन से जो है टेलुरियम ऑलमोस्ट जो है आयोडीन 131 बना लेता है। उसके बाद में इवन हम जो है जो ऑक्साइड है उसको आयन एक्सचेंज कॉलम में बाउंड करके भी आयोडीन 131 को हम इल्यूट कर सकते हैं एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमनली जो पाउडर्ड एलिमेंटल टेलुरियम है इरेडिएट करके 131 सेपरेट करके उसे हम ड्राई डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट कर लेते हैं। एलिमेंट जो है उसे माइल्डली एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैनर। रेडियो एक्टिव डिके जो है आयोडीन 131 का हाफ लाइफ 8.02 डेज है, और आइसोटोप जो है इसमें 78 न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में, और जो स्टेबल है दैट इज 121 आयोडीन, इट हैज 74। सो ऑन डिके आयोडीन क्या करता है? 2 स्टेप में डिके होता है। एक तो ये जेनॉन 131 बनाता है एज यू कैन सी इन द रिएक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम इट इट ऑल्सो फॉर्म्स गामा रेज ऑन आफ्टर अ रैपिड बीटा डिके। तो 2 स्टेप में जो है इसका क्या होगा? डीके होता है टू फॉर्म अ स्टेबल जेनॉन 131। इट इज़ यूज्ड फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म टू ट्रीट थायराइड कैंसर्स। इसको स्वेलो करते हैं आयोडीन 131 को, जिसके भी पेशेंट को जो है ट्रीट करना है। एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में और कंसंट्रेट होता है स्पेशली थायराइड ग्लैंड में, जहाँ ये ग्लैंड सेल्स को डिस्कवर कर देता है। थैंक यू।